Now we will discuss FFT computational complexity. So butterfly structure, generalized butterfly structure for FFT computation is this. These are input number 1, this is input number 2. Okay, this is output 1 and output 2. And this is a Tweedle factor by which we will multiply the input 2. This is minus 1. Okay, this. So per butterfly, how many complex multiplication? There is only one complex multiplication. One complex multiplication per butterfly. And these are summation, summer. So how many complex addition? 2 complex addition per butterfly. Or n is equal to 2 per v. Okay. Take log both side base 2. So I will get log 2 base log n base 2 v. V denote the number of stage in FFT computation. V denotes the number of stages in FFT computation. Okay, so this is log n base 2 stages per FFT computation. And how many butterfly per stage you have to? So there is n by 2 number are butterflies per stage. N by 2 butterfly per stage. Let us see in this structure. n point FFT computation में आप देखेंगे कि n is here 8, so n by 2 is a 4. So there, this is first stage. इस black line से इस side ये first stage है, ये second stage है. This is first stage. This is second stage. And this is थर्ड स्टेज. ओके, अब इसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके अलग अलग कलर यूज किया गया है. फर्स्ट स्टेज में आर होने चाहिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. 4 हो गए ना. एक पिंक, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक वायलेट, एक रेड. अब इसमें भी देखोगे 4 कलर यूज किए गए हैं, तो इसमें भी देखोगे 4 बटरफ्लाई हैं सेकेंड स्टेज में. एक मैजेंटा कलर का, एक स्काई ब्लू, एक डार्क ब्लू और एक पिंक. सिमिलरली इसमें भी देखोगे तो एक रेड कलर का बटरफ्लाई बन रहा है, एक ब्लू कलर का बटरफ्लाई बन रहा है. थर्ड स्टेज में भी एक ग्रीन का बटरफ्लाई, ग्रीन कलर से बटरफ्लाई बनाए हैं, एक स्ट्रक्चर, और एक ब्लैक कलर से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. सो नंबर ऑफ butterflies per stage will be n by 2. Okay, so let us calculate complex multiplication per FFT. So I will multiply, first I will 1 to this is number of stages per FFT. Okay, I will multiply number of stages per FFT with the number of butterfly per stage, and then I will multiply
number of complex multiplication per butterfly, and that will give n by 2 into log n base 2. Okay, similarly I can obtain complex addition per FFT. First I will write number of stages per FFT, then I will multiply this with the number of butterflies per stage, and then number of complex addition per butterfly, and result is n into log n base 2. So order of computational complexity of the butterfly is a proportional to is O of n log base 2. ओके, तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एफएफटी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन फॉर रेडिक्स टू डेसिमेट इन टाइम एफएफटी एल्गोरिथम के लिए।